Good morning, my dear student. Today we will read your class 8 SST chapter Women's Caste and Reform Working Towards Change. My dear student, if you have remembered my previous class where I have already discussed about the biography of Rajaram Mohan Rai and some short information about Rajaram Mohan Rai, where I discussed you that Rajaram Mohan Rai was one of the great intellectual person of India during 19th century. Rajaram Mohan Rai, he was social reformer, and we have read about that by which way they tried to abolish the sati system. Sati system, what do you mean by sati system? If you remember my previous class where I already told you about the definition of sati. सती का मतलब क्या था, मैंने आपसे कहा था, अगर आपको याद होगा तो मैंने कहा था कि जब किसी भी विमेंस के हस्बैंड की मृत्यु हो जाती थी तो उस महिला को पति के साथ जलती हुई चिता पे बैठ के अपने शरीर को जला देना होता था। ये सती कहलाती थी। ये व्यवस्था सती सिस्टम के नाम से जानी जाती थी। निश्चित रूप से ये एक ऐसी व्यवस्था थी जो समाज के लिए एक कर्स थी, अभिशाप के रूप में थी। आई मीन टू से दैट कि सपोज कंडीशन दैट वाज वेरी क्रिटिकल फॉर वुमेन्स व्हेन द विमेन्स, जब महिला क्या करती थी, जब विमेन्स जो होती थी उसकी कहता है कि if some parts of the country, if you will observe, the widow system was spread, फैला हुआ था. Every reformers, they were aware of that. They want that this system that should be abolished, समाप्त होना चाहिए, सती सिस्टम खत्म होना चाहिए. लेकिन अभी इस पे ऐसा कोई कानून नहीं बन रहा था. ऑफिशियली इसको समाप्त करने के लिए कोई प्रोविजंस नहीं बने थे. In some part of the country, widows were praised if they choose death by burning themselves on the funeral pyres of their husbands. Women who died in this manner, whether willingly or otherwise, were called sati. Sati means the virtuous women. Sati, it means, according to society, their meaning was the virtuous woman. वर्चुअस वुमेन, हाउ स्ट्रेंज, कितना आश्चर्य की बात थी कि एक महिला जो अपने पति के साथ जलती हुई चिता पे जल के मर जाती थी, उसे समाज सम्मान के दृष्टि से देखता था, उसे वर्चुअस लेडी के रूप में पूजने लगता था. बट सपोज यू शुड फील दैट कि अगर ये घटना आज हो तो क्या होता, और ये अपने ऊपर आप लेके देखे तो कैसा लगता है. No doubt it was curse for society, and Raja Ram Mohan Rai, they decided to abolish this sati system, and they did work on that. Raja Ram Mohan Rai, with the help of Lord William Bentinck, in 1829, he passed Act. According to that, women cannot force to be sati. Article 1829 में जो उन्होंने नियम बनाए, उस नियम के तहत ये पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया, रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया कि कोई भी किसी भी विमेन्स को क्या करेगा, सती होने के लिए बाध्य नहीं कर सकता. नो वन कंपेल द विमेन्स टू बी सती, इवन द कंडीशंस, कुछ भी हो. कहता है कि अब इन चीजों पे लोगों ने अपने अपने विचार भी रखने शुरू किए. ये सती सिस्टम सही है, विमेन्स कंडीशन कैसी होनी चाहिए, इन चीजों पे बातें करते हुए कहते हैं कि these debates were often initiated by Indian reformers and reform groups. One such reformer was Rajaram Mohan Rai. He founded a reform association known as Brahma Samaj or Brahma Samaj.
My dear student, I have already informed you about that Brahma Sabha and Brahma Samaj. That was established by Raja Ram Mohan Rai in 1828. क्या था ये ब्रह्म समाज, क्यों बनाई गई ये ब्रह्म समाज? नो डाउट इट वॉज द वेलफेयर फॉर विमेन्स, महिलाओं की सुरक्षा के लिए. इट वॉज द रिफॉर्म ऑफ द सोसाइटी. इट वॉज अगेंस्ट द ऑल कर्सेस विच वॉज प्रैक्टिसेस, ऑल इविल्स विच वॉज प्रैक्टिस इन सोसाइटी. समाज में जो उसमें जो गलत प्रैक्टिसेस हो रहे थे उनके अगेंस्ट इस तरह की नीतियां राजा राम मोहन राय के ब्रह्म समाज में चल रही थी. फर्दर वी हैव सीन द अदर social reform association like Brahma Samaj, Dev Samaj, Prarthana Samaj and such type of other. Okay. And Raja Ram Mohan Rai, the people such as the people such as Ram Mohan Rai are described as a reform because they left the change were necessary in society and unjust practices needed to be done away with. They thought that the best way to ensure such change was by persuading peoples to give up old practices and adopted a new life. Raja Ram Mohan Rai tried to the mentality of society. Raja Ram Mohan Rai directly knock on the mind of the human beings that you have to change your mind, and the sati totally against our society. I mean to say that Raja Ram Mohan Rai type other philosopher, other intellectual person, other reformers, they try to search the statement which come from our Vedas and Upanishads, where there was no explanation about sati. On the basis of that, they tried to prove that in our ancestral land, in our ancestral history, there were no sati was practiced. So why nowadays this type of system practiced? With the help of our ritual text, they tried that society kicked out such type of system which is against the women's welfare, which against for women's. I hope you are getting what I am saying. Raja Ram Mohan Rai was keen to spread the knowledge of Western education in the country and bring about the greater freedom and equality for women. And Raja Ram Mohan Rai wants the further steps they promoted in Bengal. Raja Ram Mohan Rai wanted that the people should accept the Western type of education policies, where the science and tech, where the modernization, I mean to say that according to him, Raja Ram Mohan Rai tried that women's gain the modern education, the Western education. On the basis of that, if she trained herself, if society failed their mentality and society also trained the Western education, they can understand what is the meaning of sati and what is the meaning of the bad evils which was practiced in society. So he favored. So Raja Ram Mohan Rai favored किसके? वेस्टर्न एजुकेशन के. देश में पश्चिमी संस्कृति, पश्चिमी शिक्षा प्रणाली का ही प्रचार प्रसार हो, इसके वो क्या थे, इस बात के प्रति उनका एक्सेप्टेंस था. लेकिन राजा राम मोहन राय, ये भी बात उनके मन में था कि हम मॉडर्न एजुकेशन तो लें, लेकिन मॉडर्न एजुकेशन के साथ अपने उन पारंपरिक ज्ञान को भी न छोड़ें. Okay, I hope you are getting what I am saying. Raja Ram Mohan Rai wrote about the way women were forced to bear the burden of domestic work, confined to home and kitchen, and not allowed to move out of become educated. राजा राम मोहन राय ने कहा कि ये जो एजुकेशन है, ये शिक्षा ही ऐसी चीज है जिसके द्वारा हम महिलाओं को
मजबूती दे सकते हैं। विमेन्स किचन से बाहर आ सकती है। विमेन्स नॉट डिपेंड ऑन अदर्स, शी कैन स्टैंड ऑन देयर फीट। आई मीन टू से दैट शी बिकम व्हाट, वो इस लायक हो जाएंगी कि वो अपना सारा भार अपने खुद ढो सकती है। इट मीन्स कि आर्थिक स्वतंत्रता, राजा राम मोहन राय he had focused about the economic freedom of for women, महिलाओं के लिए आर्थिक स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। एंड इट वॉज नॉट कंप्लीटेड वेन एवर विमेन्स नॉट एजुकेट। आई होप यू आर गेटिंग। सपोज इफ women will fully illiterate, how can it possible that he can depend on herself? तो उसको उस स्थिति में क्या करना पड़ेगा? घर में ही रहना पड़ेगा, किचन देखना पड़ेगा। लेकिन राजा राम मोहन राय ने इन चीजों को फोकस किया और उन्होंने कहा कि विमेन एजुकेशन इज आल्सो मस्ट। Here two things which I am discussing. First, that sati that was abolished by Raja Ram Mohan Rai, and second, Raja Ram Mohan Rai that the women's they have to be educated. Without it, she can't be develop their condition. Without it, she cannot depend herself. Without it, she can't think that what is in favor of her and what is not. And how can he oppose the society's view which imposed on her? सोसाइटी के विचार जो उनके ऊपर थोपे गए थे, क्या सही है क्या गलत है, इन चीजों के बारे में बिना शिक्षित हुए, बिना एजुकेट हुए, बिना लिटरेट हुए वो इन बातों का विरोध नहीं कर सकते थे। ये सबसे महत्वपूर्ण बात थी। राजा राम मोहन राय इन चीजों को फोकस किया। माय डियर स्टूडेंट, एंड देन आफ्टर द Raja Ram Mohan Rai work that was admired by the social reformers during that time as well as the British imperial officers. Raja Ram Mohan Rai wrote about that the women were forced to bear the burden of domestic work, confined to the home and kitchen, are not allowed to move out and become educated. I hope you are getting what I am saying. I think there is no need to explain again that the view of Raja Ram Mohan Rai. Raja Ram Mohan Rai that has clear view that without education women cannot be develop their situation, their condition. She cannot be depend on herself. She cannot fight against society. And as I inform you that Raja Ram Mohan Rai and their strategy to oppose the society's the evil practices on the basis of the statement which is given in a text, religious text like Veda and Upanishad. I also inform you that कि राजा राम मोहन राय क्या करते थे, उन धार्मिक ग्रंथों से उन श्लोकों को, उन सूक्तियों को, उन स्टेटमेंट को निकालते थे जो राजा राम मोहन राय के विचारों का फेवर करे, जो ये कहे कि विमेन्स को एजुकेट करना चाहिए, विमेन्स को भी कुछ राइट है, विमेन सोसाइटी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। साथ ही साथ सती व्यवस्था, सती सिस्टम का कहीं हमारे वेदों में, उपनिषदों में, धार्मिक ग्रंथों में कहीं उल्लेख नहीं प्राप्त होता। लाइक महाभारत, लाइक वेदा, लाइक उपनिषद, लाइक रामायण, एज वेल एज कुरान एंड बाइबल। सो on the basis of that, Raja Ram Mohan Rai succeed that what he want to teach the common people, क्या वो बताना चाहते थे, क्या वो लोगों को पढ़ाना चाहते थे, इन चीजों में वो सफल हुए। और फाइनली रिजल्ट, सती सिस्टम was abolished and new type of vernacular schools were open and running properly. We will read about them in further this chapter. Okay, the next topic which we are going to discuss, the changing the lives of widow. Raja Ram Mohan Rai was particularly moved by a problems widow faced in their lives. He began a campaign against the practice of sati. I told you a story that in his childhood era, he saw that his brother's wife, elder brother's wife, I mean to say that उनकी जो भाभी थी, she burned on fire, I mean उनको आग पे जला दिया गया।
वो सती हो गए ऑन द फ्रंट ऑफ हिमसेल्फ. दैट इंसिडेंट्स was very much disturbed Rajaram Mohan Rai. Rajaram Mohan Rai decided on that day that at any rate, at any cost, I will try to abolish such type of system. Which is why? Because this is not good for our society. Rajaram Mohan Rai ने इसीलिए डिसाइड किया, according to your book, that कि राम मोहन राय was particularly moved by the problems of widow faced in their lives. राजाराम मोहन राय ने सीधा उन्हीं चीजों पे चोट किया जो विडो विमेन्स थी, जो विधवा महिलाएं थी, और उनके जीवन में जो घटनाएं हो रही थी, बाल छिलवा लेना, सफेद कपड़े पहनना, समाज से दूर रहना, लोगों के संपर्क में नहीं आना, लोगों से बातें नहीं करना, अच्छे खाने नहीं खाना, आभूषण, ऑर्नामेंट्स, आई मीन टू से दैट कि सी कैनॉट, क्या कर सकती थी, अपने को सुंदर नहीं बना सकती थी. इस तरह की सारी समस्याएं थी. तो राजाराम मोहन राय ने डायरेक्ट चोट किया किस चीज पे, विडो सिस्टम पे. राजाराम मोहन राय वाज पर्टिकुलरली मूव्ड बाय द प्रॉब्लम्स विडो फेस्ड इन देयर लाइव्स. ही बिगेन कैंपेन अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ सती. Ram Mohan Rai was well versed in Sanskrit, Persian, and several other Indian languages. I have already told you in my previous class that Rajaram Mohan Rai, he was the intellectual person. Rajaram Mohan Rai had a lot of knowledge about the literature which was wrote in the various languages. Various languages known by him like Hindi, English, Sanskrit, Persian, Hebrew, German, Arabic, Bangla. So it was in favor of him. He read the various book and point out some important statement, and on the basis of that he tried to prove that what he was doing on that day, that is true. And that practice which is running in a society that was not favored by our ritual text, our religious text, on the basis of evidence what he read in the text. वो जो किताबों में पढ़े, भिन्न भिन्न भाषाओं में लिखी गई धार्मिक ग्रंथों की किताबों में जो उन्होंने पढ़ा, जो स्टेटमेंट मिला, उसके आधार पर बार बार वो प्रूफ ये करना चाहते थे कि समाज में जो बैड प्रैक्टिसेस है, इविल प्रैक्टिसेस है, वो कहीं भी धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख नहीं की गई है, धार्मिक ग्रंथों में इनको नहीं बताया गया है. तो इसके आधार पर उन चीजों की बातें करते हैं. कहता है आगे कि Rajaram Mohan Rai was well versed in the Sanskrit, Persian, and several other Indian and European languages. He tried to show through his writings that the practice of widow burning had no sanctions in ancient text. By the early 19th century, as you have read in chapter 7, many British officials had also begun to criticize Indian tradition and customs. Again, I inform you that the step which was taken by Rajaram Mohan Rai, that was also favored by British officials. British officials, they were totally against the bad practices which was doing in society, like sati, like human assassination. I mean to say that sacrifices, बलि देना बच्चों को, छोटी बच्चियों की हत्या कर देना, स्लेवरी सिस्टम, इस तरह की सारी व्यवस्थाओं के अगेंस्ट थे. ब्रिटिश ऑफिसर्स तो ऐसा ही चाहते थे, रिफॉर्म. अकॉर्डिंग टू हिम देन द इंडियन कल्चर इज टोटली वाइल्ड कल्चर. Indians are totally uncivilized. We are here for the sake of God to civilize Indians. They felt, I mean to say that the European felt that Indians, they were totally uncivilized. They were totally uncultured, and it is duty of the
Europeans, I mean to say that especially Britishers, that they trained himself and cultured himself. The statement that Indians are white man burdens, ये वो स्टेटमेंट हमारे प्रति सोचते थे, और ये सारी जो बैड प्रैक्टिस सोसाइटी में चल रही थी, ये उनकी उस स्टेटमेंट को कहीं ना कहीं फेवर कर रही थी. तो इस आधार पर जब राजा राम मोहन राय ने कुछ स्टेप्स उठाए तो अंग्रेज अफसरों ने भी उनका सपोर्ट किया, उन्हें मदद दी. अब British officials had also begun to criticize Indian traditions and customs. They were therefore more than willing to listen to Ram Mohan Rai, who was reputed to be a learned man. In 1829, Sati was banned. What I told you, that 1829, Sati system that was banned, that was total. But that was banned. I was used various times. It was abolished. The abolish word is not suitable. Why? Because कि पूरी तरीके से abolish नहीं हो सकता. लेकिन but what I want to tell you that it was banned by officially. Raja Ram Mohan Rai was succeed to ban sati practices in society. तो सती व्यवस्था को समाप्त करने के लिए, उस पर बैन लगाने के लिए कानूनी रूप से कुछ नियम बनाए गए. कोई भी व्यक्ति किसी भी महिला को अब जो विडो हो उसको सती नहीं कर सकता था. इवन इसका काफी इंडिया में विरोध हुआ, लेकिन फाइनली ये स्टेप विमेन्स के फेवर में थी, यूनिटी के फेवर में थी, तो ये सभी के द्वारा ग्रेजुअली दे एक्सेप्टेड एवरीवन. द स्ट्रेटजीज adopted by Ram Mohan Rai was used by later reformer as well. Whenever they wished to challenge a practice that seemed harmful, they tried to find a verses of the sentence in the ancient sacred text that supported their points of view. Then they suggested that the practice as it existed and present was against early traditions. It was the great strategy which was used by Raja Ram Mohan Rai. What was their strategy? I told you, I informed you again and again that he always uses the verses of the Vedic texts and traditions, religious texts and traditions. The statement which was given in our text, which is given in our religious text, with the help of that, they want to prove that what we are saying that is good, that is totally against our ritual text, our religious text. जो हमारे धार्मिक ग्रंथों में दिए गए बातें हैं, जो धार्मिक ग्रंथों में दिए गए स्टेटमेंट है, ये धार्मिक ग्रंथों में दिए गए स्टेटमेंट, ये धार्मिक ग्रंथों में दिए गए संस्कृत के श्लोक, ये धार्मिक ग्रंथों में कहे गए जो विद्वानों की वाणियां हैं, उसमें कहीं भी इस तरह के इविल प्रैक्टिसेस की बात नहीं की गई है. और समाज जिस इविल प्रैक्टिस को यूज कर रहा है टोटली वो अगेंस्ट है, ह्यूमैनिटी के टोटली अगेंस्ट है, हमारे धार्मिक ग्रंथों, हमारे प्राचीन मनुष्यों की विचारधाराओं के. तो इस स्ट्रेटजी का यूज बाद में जो सोशल रिफॉर्मर आए उन लोगों ने भी किया. आई मीन टू से दैट आफ्टर राजा राम मोहन राय, द सोशल रिफॉर्मर हु ट्राइड टू डू फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, they uses the strategy of Raja Ram Mohan Rai. They took the statement, the verses about the religious text, and on the basis of that, they tried to prove that what was practiced in society that is totally against. There were no statement in favor of that type of evil practices in our religious text. And ये जो तरीका था, ये तरीका भारतीय जनमानस के मन और मस्तिष्क पे सीधा चोट करता था कि यदि प्राचीन काल में इस तरह की व्यवस्था हमारे धार्मिक मनुष्यों ने नहीं दिया, तो आज ये व्यवस्थाएं क्यों चल रही हैं? ये नई चीजों को किसने बनाया? क्यों ये चीजें समाज में रन कर रही हैं? इन चीजों पे उन्होंने अपनी बात को समाज को समझाने में सफल रहे. माय डियर स्टूडेंट, एंड देन आफ्टर व्हाट हैपेंड, कहता है कि इस तरीके से उन्होंने अपने सत्य सिस्टम को धीरे धीरे खत्म करने का प्रयास किया. फॉर इंस्टेंस, वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिफॉर्मर ईश्वर चंद विद्यासागर. Similarly,
the Raja Ram Mohan Rai, one reformer also, which is very important in Indian history, that was Raja Ram Mohan Rai. Sorry, that was Pandit Vidyasagar. Pandit Ishwarchand Vidyasagar. Their role in the betterment of the women education, their role in the betterment of the widow remarriage act, that was the very important. Raja Ram Mohan Rai was the, as well as Raja Ram Mohan Rai, Pandit Ishwarchand Vidyasagar was the very intellectual person. He was a master in Sanskrit school. He was the Brahmins, and then after he opposed the evil practices which was running in society. राजा राम मोहन राय की ही तरह ईश्वरचंद विद्यासागर एक समाज सुधारक के रूप में बंगाल में दिखाई देते हैं। जिस तरीके से राजा राम मोहन राय ने सती व्यवस्था को समाप्त किया, उसी तरीके से ईश्वरचंद विद्यासागर ने अब विडो रिमैरिज को प्रमोट करने का प्रयास किया। महिलाओं की जो विमेन्स थी, जो विडो थी, उनकी शादी के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम्स थी। दैट वाज प्रमोटेड बाय ईश्वरचंद विद्यासागर। फॉर इंस्टेंस, वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिफॉर्मर्स, ईश्वरचंद विद्यासागर, used the ancient text to suggested that widow could remarry. His suggestion was adopted by British officials and law was passed in 1856, permitting widow remarriage. Those who were against the remarriage of widow opposed Vidyasagar and even boycotted him. ऐसा जब कोई भी व्यक्ति, when some social reformers try to take some initiative steps against the ritual practice of the society, the peoples, then he was protested by common man. इवन कि जब वो व्यक्ति इस तरह की बात करने की सोचता है तो समाज के द्वारा उसको लोग बाइकआउट करते हैं। लेकिन ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से जो सती सिस्टम बैन होने के बाद विमेन्स बची, उनकी लाइफ को ठीक करने के लिए विद्यासागर ने विडो रिमैरिज एक्ट पारित कराने में सफल रहे। ब्रिटिशर्स, they also criticize the customs and culture of Indians. There is no need to again explain that what they think about our custom and ritual practices. विद्यासागर ने इन लोगों की हेल्प से एक एक्ट पारित कराया। विडो रिमैरिज एक्ट पारित हुआ 1856 में, और विडो रिमैरिज एक्ट के थ्रू नो वन हैव राइट टू व्हाट, to denied and to stop women to remarry again. महिलाओं को शादी करने से ना कोई रोक सकता था और ना ही कोई मना कर सकता था कि आप ऐसा मत करिए। I mean to say that, what again I told you that his suggestion, Vidyasagar suggestion, was adopted by British officials and a law was passed in 1856 permitting widow remarriage. Those who were against the remarriage of widow opposed Vidyasagar and even boycotted him. By the second half of the 19th century, the movement in favor of widow remarriage spread to other parts of the country in the Telugu-speaking area of the Madras Presidency. The Veers, Selingam, Puntulu formed an association for widow remarriage. Around the same time, young intellectuals and reformer in Bombay pledged themselves to working for the same causes. The reform association called Arya Samaj. He also supported the widow remarriage. Yet the number of widows who actually remarried, the number of widows who actually remarried and remained low. Those who married were not easily accepted in society, and conservative groups continue to oppose the new ideology. I mean to say that after Vidyasagar, there were the various peoples who did work for the betterment of the women, for the betterment of the
remarriage, widow remarriage. Veer Selingam Putlu in southern part of India, they did work, and he appreciated by historians. Same D.K. Karve in Maharashtra. Arya Samaj also supported the widow remarriage because it was the very important for the betterment of the widow women's. तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों ने इन चीजों को एक्सेप्ट किया, इन चीजों को स्वीकार किया। इनके आधार पर लोगों ने इनको समझा। आई थिंक यू आर ऑल गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। टुडे we read the condition of women during 18th century and the role of Ishwarchand Vidyasagar and Raja Ram Mohan Rai. In my next video, in my next class, we will read the condition of girl, that कि किस तरीके से वो एजुकेट हुई, क्या समाज में कुछ अवेयरनेस आई इन चीजों से, समाज में इनका विरोध किया गया, ऑब्वियसली वो तो हुआ। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर को बहुत सारे लोगों ने बॉयकॉट कर दिया, फिर भी ईश्वरचंद्र विद्यासागर विमेन्स के फेवर में काम करते रहे। समाज में बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर ग्रुप्स ने भी इसके फेवर में काम किया, और फिर इसका रिजल्ट हुआ कि हमारे सोसाइटी से वो बैड प्रैक्टिसेस धीरे धीरे समाप्त होने लगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। गुड बाय एंड टेक केयर।